Hi everyone, can you all hear me first of all? Let's see. Yes, give me a second. It's good. Okay, give me a second. So, hi guys. Yes, I am sure I am live right now. You can hear me and see me. That's really awesome. So, we'll be starting soon. First of all, let me just see how many of you are there in the chat. I can see plenty of you are giving me a hi over here. That's right. Shinchan, Sweetie, we have Divya, we have Raju, Yashika, Kriti, Sadhana, we have Anjali, Vishal, Pinky, Megha, Aarti, and we have Shinchan, we have Raju, and plenty of you there. Amazing, guys. Welcome to this another class where we are absolutely gonna learn almost every important thing that is really necessary for a NEET 2020 examination and which is आज हम क्या करने वाले हैं you always remember right हमने पिछली क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी फॉर क्लास 11th आज हम फिजिकल केमिस्ट्री करने वाले हैं फॉर क्लास 11th एंड यस रिवीजन ही है आपका नीट 2020 के लिए so yes I am sure you guys are pretty much prepared so how many of you were there in the organic class guys which happened last Saturday do let me know कितने बच्चे थे वहां पे and yes आज वो कितने सारे बच्चे हैं चैट पे I would like to see that as well so yes let's see over here. Come on, guys. I want you all on the chat as soon as possible. I want to see some smileys so that we can have this awesome class over here. Great. Yes, over here, plenty of you are still giving me a hi. That's really awesome. That's awesome. बहुत बढ़िया. So over here, guys, do remember we are absolutely gonna cover all the important things. ठीक है? सारा नहीं की करेंगे. जो स्पेसिफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11th वो बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं ताकि आप जब नीट के एग्जामिनेशन में जाओ और जब अभी भी आप अगर रिवाइज करने की कोशिश करो या प्रिपेयर करने की आपको कोई भी दिक्कत ना आए तो यस आई एम श्योर यू गाइस आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट सो लेट्स गेट स्टार्टेड चलें आगे यस इससे पहले हम स्टार्ट करें यू शुड बी सब्सक्राइबिंग दिस चैनल व्हिच इज वी बायोटॉनिक एंड लाइक द वीडियो अगर अभी तक नहीं किया है तो यस सो कम ऑन गिव मी अ क्विक थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अगली बारी जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और जितनी भी बाकी क्लासेस हो जो सूरी सर आएंगे आपको फिजिक्स पढ़ाने वानी मैम आपको पता है हमेशा आती है इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाने तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिले भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं यस दैट्स रियली ऑसम so plenty of you were actually there yes plenty of you giving me me over there that's really awesome so let's move ahead and यहाँ पे we gonna talk about stoichiometry so stoichiometry से शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स की कहानी देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में that's awesome so over here calculation of the quantities so whenever we're going to talk about stoichiometry I'm going to use the red pen over here yes calculation of quantities of the reactants and the products involved in a chemical reaction let's say chemical reaction ho raha hai let's say we have a chemical reaction A plus B converting into C plus D ठीक है let's say this is how it is happening now you should always remember ये chemical reaction है पर हमारे को इसमें क्या पता चल रहा है कि हम कितनी क्वांटिटीज ए और बी की ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटीज सी और डी की बन रही हैं बिल्कुल भी नहीं सो क्या करना वाले हम यहाँ पे वी शुड हैव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और वो होने वाली है हमारी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमेशा ये बात ध्यान रखनी है ओके सो यहाँ पे होने वाला है ए स्मॉल a is nothing but your stoichiometric coefficient जो हमारे को बता रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स हम यूज करने वाले हैं राइट सो दैट्स गुड ओवर हियर वी हैव स्मॉल b ये हमारे को बता रहा है हम कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं वी हैव स्मॉल c ये हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बन रहा है हमारा c का एंड स्मॉल d इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस फॉर d component so yes ये बातें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है this is where it is going to help you a lot now let's go ahead and समझना हमारे को जरूरी है कि पहली बात a b c and d are nothing but your stoichiometric coefficients these are your coefficients so आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है ठीक है so अब आप यहाँ पे बड़ा a जो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C and कैपिटल D है those actually are your components let's take an example a real world example where it could be HCl plus NaOH is going to give you your NaCl plus H2O this is exactly a
chemical equation, but यहाँ पे stoichiometry काम आएगी, which will tell you how many number of moles are you using. 1 1 1 and 1. Yes, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Okay, come on guys, that's really awesome. So now over here, let's talk about what is absolutely gonna be whenever it comes to your mole concept. Yes, so concentration terms की जब हम बात करेंगे, give me a second. I am looking at plenty of you are in there in the chat who are telling to me that it's lagging. It shouldn't lag. Guys, come on, bring yourself on the chat. How many of you are actually experiencing lag? Do let me know, because it should not happen. This should not happen. Okay, that's awesome. So over here, do pay attention, guys. We are talking about mole fraction. We are talking about percentage by mass. Whenever we talk about mole fraction, it is nothing but the number of moles of solute लिख देते हैं यहाँ पे, upon the total number of moles, NT, which consists of, the total number of moles is therefore the number of moles for your solution, right? Solution में दो components होते हैं, solvent and solute दोनों. Yes, so do remember that, right? Over here, whenever we're going to talk about percentage by mass, whenever we're going to talk about percentage by mass or percentage by volume, you should remember, give me a second guys, I think there is some issue. Give me a second. Hello. Yes. Yes. Can you hear me? It's buffering a lot. Okay. Let me just see what can I do. Okay. Uh, we'll talk about it later. Let me just see what can I do. Okay. So yes, guys, I have got the information. Yes, some kind of buffering is exactly happening. Yes. Let me just refresh things. Let me just reconnect with my Wi-Fi. Probably that will help me. Right. So let's see. Okay. So over here, let's see if things are working really fine. Okay, give me a second guys, I am actually going to do that. Thank you for staying with me. Let's continue. So over here do remember we are talking about mole fraction. So give me a second, let me just write it for you. Mole fraction सबको आता है. Mole fractions के लिए जब भी हम लिखते हैं, that is number of solute particles of, or number of moles of solute upon total number of moles, which I am writing as NT. NT is nothing but number of moles of solvent plus number of moles of सॉल्यूट, है ना? जब हम बात करते हैं परसेंटेज बाय मास की, दैट क्लियरली मींस अगर ऐसे मैंने 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ऐड किया है 95 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 5 प्लस 95 बन जाता है 100. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका 100 ग्राम्स है, राइट? एंड अगर मैंने 5 ग्राम्स लिया था आपका पर्टिकुलर, व्हाट डू वी कॉल इट एज योर सबस्ट्रेट, इट इज गोना बी एज 5%. सो यहाँ पे आपने सीधा मल्टीप्लाई करना है इनटू 100 and you're gonna have your 5%, which is weight by weight or gram by gram or gram by gram percentage. So आपने हमेशा ध्यान रखना है. Whenever you gonna talk about, is it buffering again? Oh, what exactly happened to the internet? I think internet was fine. Okay, so what can we do about it? Buffering again. Give me a second. ओके, हाय गाइस अगेन. मोलैरिटी एंड मोलैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. So whenever we're going to talk about molarity guys, which is denoted as capital M, you should remember it is the number of moles of solute upon volume of solution in liters. So आपने ये बात ध्यान रखनी है. और जब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, it is a smaller m, ठीक है छोटा भाई, which is nothing but your number of moles of solute. Your numerator remains same, but it becomes volume, not volume, mass in kg of what? Of your solvent. So आपने ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? So denominator में mass by denominator में mass of your solvent आता है. So ये आपने हमेशा बात ध्यान रखनी है. And whenever we talk about molarity, it is volume of solution, right? So that's really awesome. Now let's move on to the next one. Yes, so यहाँ पे we have a question for you guys.
We have a question for you and you have to tell me what is going to be the answer. A mixture of NH4NO3 and NH42HPO4 contains 30.40 percentage mass percentage of nitrogen. What is the mass ratio? What is going to be the mass ratio of the two components in the mixture? I am actually going to give you a few of the seconds. So let's see how many of you are going to able to do that. Let's see. जल्दी से करना है पर आप लोगों ने. Do let me know what do you think is going to be the correct answer over here. I'm going to give you probably almost 30 seconds. Let's see. I'm sure things are going fine, guys, with the buffering. It shouldn't happen today. Yes, that's good. So let's see how many of you are going to be there giving me the correct answer. Okay, and the correct answer over here to this question is absolutely, I'm going to tell you in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Your time ends now. It's absolutely 2:1. Yes, so A is the correct answer over here. For those who are giving me B, no, B and D are not the one which is going to be right. So the correct answer to this question is absolutely A. So how are we going to do that? So you should remember what informations are given to you. We have a mixture of NH4NO3 and we have a second component which is NH4 twice HPO4 contains 30.4 percentage of mass percentage of nitrogen. Okay, what is the mass ratio of two other components in the mixture? So you should remember. So over here, do pay attention. We are doing x upon 80. We're doing x upon 80 into 2 into 14. 14 is what? 14 is nothing but your mass of your nitrogen. Your mass of your nitrogen over here. But यहाँ पे guys do pay attention where we are talking about. यहाँ पे हमारे पास दो nitrogen है ना, and 80 is the molecular mass. But यहाँ पे we look into again 132. That is the molecular mass of your the second compound. And yes, over here again we have 14. और यहाँ पे हमारे पास फिर से दो nitrogen है. इसीलिए we are multiplying it by what is which is multiplying it by 2. And you should remember हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे we are trying to find the mole fraction, right? So यहाँ पे we are gonna have the number of nitrogen over here and number of nitrogen over here upon x plus y. Just multiply it by 100 and we are absolutely going to have the percentage which is 30.4. Now on solving it up, we get x is to y which is 2 is to 1. This is the reason 2 is to 1 which is A becomes your correct answer over here. So आपको ये बात ध्यान रखनी है. You have to be very much specific about what is question actually asking. We're talking about mass ratio over here, guys. We're talking about mass ratio. So yes, I'm sure you're getting the point, and I am sure just because of the buffering, I'm sure अभी buffering ठीक हो गई होगी and buffering नहीं हो रही है, right? चलो, let's move to the next question. Some important relations from atomic structures. So आपको पता होना चाहिए angular momentum. जब orbital angular momentum के बारे में बात करते हैं, L value we have to use. You have to use the L value over here, guys. Pay attention. ठीक है? L value guys मैं लिख देता हूँ for S. L value is absolutely 0. For P it is 1. For D it is 2. And for F it is 3 and so on. Okay. Spin angular momentum के बारे में बात करें, it is h upon 2 pi. Yes, and which is going to be under root s upon s into s plus 1. ये आपको बात ध्यान रखनी है. No buffer people, please refresh. Yes. Thank you so much, guys. Plenty of you are saying yes, it's buffering. Plenty of you are saying it's not. Thank you so much. But लड़ाई उतनी करो जो मुझे समझ में आए. अगर बफर हो रहा है, do let me know पक्का से. ठीक है? Don't confuse me over here. Okay. Where n अच्छा spin magnetic momentum के बारे में बात करें, n into n plus 2 whole under root, where n is nothing but your number of unpaired electrons. So you have to tell me if n is equals to 2, which is the number of unpaired electron in any of the species is 2, what is going to be a spin magnetic moment? Put it on the chat over here, guys. What is going to be the answer over here? Maximum number of electrons in a shell. Maximum number of electrons in any shell. So over here, if you're going to have shell number 1, yes, हमारे को पता है total maximum electrons होते हैं हमारे पास 2. अगर shell number 2, you simply add over here which is n and you're gonna have the answer. So n is nothing but either 1 not 0. Whole number है हमारे पास 1 2 3 4 and so on. ठीक है? So number of orbitals in a shell simply divided by 2. Number of maximum orbitals that you can have in a shell, simply divide the formula by 2 and you're gonna have n square. रेडियल नोड्स का बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला गाइस पूछा जाता है बहुत अच्छे से. यस,
n minus l minus 1, and whenever we're going to talk about angular node it is just l. Total nodes हो जाते हैं angular node plus radial nodes. So n minus l minus 1 plus l gives you n minus 1, that is your total number of nodes. Yes, that's awesome. So now you should remember azimuthal quantum numbers के बारे में हम जब भी बात करेंगे, you have your azimuthal quantum numbers which is denoted as L, which is 0 1 2 3 4. 0 is for S, 1 is for P, 2 is for D, and 3 is for F. You should remember these numbers, okay, because they are gonna be helpful, right? Guys, I could see from my side buffering is not exactly happening. What exactly happened? But I would like to tell you that even I am having YouTube working on my phone and buffering तो नहीं हो रही है ना? So let's see. Please refresh from your side as well, है ना? So that would be great. That's awesome. So over here we are gonna talk about some important formulas where we are also talking about Rydberg's equation. यहाँ पे देखो, whenever we are actually calculating your wave number. Yes, यहाँ पे formula है 1 upon lambda. So यहाँ पे we are actually talking about the Rydberg's constant 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square, where z is nothing but your atomic number. Where z is nothing but your atomic number over here. RH is your Rydberg's constant. RH की value है 109700 centimeters per centimeter, okay? And n1 जो है आपका वो final stage होती है, n2 आपकी initial shell होता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, right? And जो second next formula है जो सबसे important है वो है de Broglie's wavelength, where wavelength is equals to your wavelength of any object is equals to h upon mv, where h is what? H is what? Which is your Planck's constant that you have to remember. ठीक है, so I'm getting it guys. अच्छा ठीक है सर, अभी फिर से चैट को थोड़ी बूस्ट करते हैं. I'm sure buffering is not exactly happening over here. Give me some smileys on the chat. Give me some smileys on the chat. फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं. काफी बच्चों को नेमिंग में प्रॉब्लम आती है. दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं है बट आपका शेल नंबर है. ठीक है, पहली बात तो शेल नंबर क्या होगा? जीरो कभी नहीं होगा. इट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. azimuthal quantum number जो होता है, you should remember is L. यहाँ पे azimuthal quantum number जो L है, L's value is always less than n. वो कभी भी सेम नहीं होगी. अगर मैं आपको कह रहा हूँ n is equals to 3, your L should be 0 1 and 2. 0 means S, 1 means P, and D second means D. So अगर मैं थर्ड शेल के बारे में बात करूँ, we all know you're gonna have 3S 3P and 3D. समझ में आया? F नहीं, 3 में F नहीं होगा. That what it tells us. Now मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, it decides the orientation of the orbital in space. ठीक है, बट आपको समझना ये है, जब हम ml which is your magnetic quantum number, it has a range from plus L to minus L. So आपने ये बात ध्यान रखनी है, और to minus L to plus L. So अगर लेट्स से मैं आपको कहता हूं आपका L वैल्यू है 2, अगर आपका L वैल्यू है 2 which is nothing for D, राइट? सो देखो क्या होने वाला है, -2 -1 0 +1 एंड +2. ये आपका एड्रेस बताता है एक एक ऑर्बिटल का. सो इट इज D, राइट? बिकॉज हमने L यूज किया है 2 which is nothing but your D. यहाँ पे I am actually telling all the address for each of your orbital. So -2 is for this one, -1 0 +1 and +2. Always remember that. अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं. आइदर इट कुड बी प्लस हाफ और माइनस हाफ. और वो हम क्यों देते हैं? इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. जस्ट बिकॉज इसलिए बिकॉज हमारे एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे सेम, और हमारे को दोनों के क्वांटम नंबर्स सेम नहीं करने. इसीलिए वी आर गोना हैव अ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ताकि हम कह सकें दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट है. Yes, so that's awesome. Now let's go to the next one. Arrange the following orbital of H atom in the increasing order of their energy. आपके लिए क्वेश्चन है, arrange the following orbital of H atom in the increasing order of their energy. So what do you think is going to be the answer? You have 3p, 2s, 4d, 3s, 4p, 3p, and 4s. So what you have to do over here is you can use the formula which is n plus 1. You should remember n plus L value निकालनी है आप लोगों ने, and you will get the answer over here. And what do you think is going to be the right answer? The correct answer over here is absolutely, I could see plenty of you are giving me answers in the chat.
Malathi Udupi is saying B, Kishore is saying D, Preeti said B, and plenty of you there. And the correct answer to this question is absolutely A. You should remember, we are doing it for H atom. I actually made you confusing. Why? Because मैंने आपको बोला n plus l value यूज करनी है, पर आपको पता होना चाहिए जब हम H एटम के बारे में बात करते हैं, whenever we talk about हाइड्रोजन एटम, फर्क नहीं पड़ता. You should remember 2s की वैल्यू रहती है सबसे कम बिकॉज वो सेकंड शेल है. 3s 3p 3p सेम होने वाले हैं बिकॉज थर्ड शेल की वैल्यू और जो सब शेल्स होने वाले हैं, जो ऑर्बिटल्स होने वाले हैं, उनकी एनर्जी सेम रहेगी. एंड 4s की बाद में भी सेम सेम रहेगी, बट 4s की एनर्जी ज्यादा होने वाली है, 4 शेल की एनर्जी ज्यादा होने वाली है थर्ड शेल से, थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा होने वाली है 2s से. n प्लस एल वैल्यू जो लगानी होती है ना, n प्लस एल जो रूल लगाना होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर सिस्टम होता है तब. हाइड्रोजन एटम जस्ट हैज 1 इलेक्ट्रॉन. Yes, for a multi-electron species, you have to use n plus l value. समझ में आया? So come on, give me some smileys on the chat, guys. Give me some smileys on the chat. Then we are moving ahead. चलो, let's move to the next question. Maximum number of electrons in a subshell is given by. Maximum number of electrons in a subshell is given by. What do you think is going to be the correct answer over here? Great. So over here, maximum number of electrons in a subshell is given by, I could look into some answers over here, and few of you doing it correct. Few of you are giving me the correct answers over here. Thank you so much, Samina. By the way, guys, I am so sorry if things are buffering. I am really not sure what is exactly happening. मेरा speed test किया था मैंने, it was really coming fine. I'm so sorry about it, but yes, be open about over here. Yes, thank you so much, Preeti. The correct answer to this question is absolutely and absolutely B over here, which is nothing but 2l plus 1 plus into 2. So you should remember, whenever we're going to talk about your maximum number of electrons in a subshell. अच्छा, let's say subshell है हमारा P. Let's say हमारा subshell है P. P के लिए वैल्यू क्या होती है हमारी L की? L value is 1. Let's try it down. L हम डालेंगे 2 into 1 plus 1, which comes out to be 2 into plus 3. Yes, it comes out to be 6. So this is the reason हमने देखा है ना, p shell जब हम बनाते हैं, we can have total of 6 electrons. 2 into 2l plus 1 is your correct answer, which is B. So come on, write it on the chat. 2 into 2l plus 1 is the correct answer. I want you to write it on the chat. चलें आगे. Let's move on to the next one, which is solid states. टाइप्स ऑफ पैकिंग देखनी है हमें फटाफट. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन बिकॉज यहाँ पे हमारा यस ब्लू चलेगा, ग्रीन पे, रेड पे भी चलेगा. दैट्स ऑसम. सो प्रॉपर्टीज, पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर. गाइस, आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है HCP का, NCCP का. CCP स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, HCP स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. रिवाइज करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF तो आपको मिलने ही वाला है. सो डू रिमेंबर दैट. यहाँ पे क्या है, which is coordination number is 12 and coordination number is 12. coordination number का मतलब क्या होता है? That means अगर आपका एक एटम है इस closed packing system में, that it is actually in a direct contact, it is actually in a direct contact with 12 number of different atoms, ठीक है, of same element. I mean atoms हैं आपके जो वो उनके साथ directly attached है. अगर आपको एक आइडिया चाहिए, let me just make it for HCP. So यहाँ पे let's say we have an atom and I am actually gonna make 1 2 3 4 5 6. So अपनी लेयर में वो completely 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैच्ड है. अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ voids के ऊपर 1 2 3. ये जो मैंने 3 बनाए ये ऊपर है, तो पहले ये था एक इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, एटम, उसके साथ 6 अटैच थे. अब 3 मैंने ऊपर लगाया है और उसी तरीके से 3 मैं नीचे लगाऊंगा, टोटल बन जाएंगे मेरे 12. दैट इज हाउ इट इज. यस, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर भी हमारे पास मिलता है 12. यू शुड रिमेंबर दैट. दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम, ठीक है. अब यूनिट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इट इज 6. CCP में आते हैं आपके 4. पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का सेम है 0.74. यस, टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज AB, एंड अगर हम CCP के बारे में बात करें, दैट इज ABC. सो आपको ये बात ध्यान रखनी है. यहाँ पे टाइप्स ऑफ वॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे काफी बच्चे यहाँ तक पढ़ के जाते हैं, वो सोचते हैं कि वॉइड्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वॉइड्स पे क्वेश्चन बहुत आता है और ट्रिकी और न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है. सो आपको ये बात ध्यान रखनी है.
ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज हैविंग रेशियो वॉइड अपॉन द स्फीयर विच इज 0.155। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें विच इज 3, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात करें विच इज 0.225 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। मतलब उस वॉइड के आसपास जितने नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आसपास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6 एंड क्यूबिक वॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 8। सो डू रिमेंबर दैट, ठीक है, दैट्स गुड। सो लेट मी जस्ट सी, ओके, गिव मी अ सेकंड, yeah. So over here, do remember that if the radius of the, acha, this is a question over here for you, and let me just see if it is buffering. Again, yes, plenty of you are saying it's buffering. I know, guys, this shouldn't happen. Let me just check again. Let me just check again. Okay. Meanwhile, if you can do this question, bring the question, answer on the chat. Meanwhile, मैं इसको rectify करने की कोशिश करूंगा. ठीक है? So let's see. It's absolutely fine, guys. Over here, the internet. Is it fine now? अब ठीक है? Not buffering, see, okay, that's really awesome. So over here, do remember we are starting up again. Yes, so if the radius of the anion in an ionic solid is 2, do we remember the ratio? Cubic void ke liye hai 0.732. So do remember that. So as we are having the radius of the cubic void upon radius of your sphere, which is anion दे रखा है हमारे को sphere, so इसकी वैल्यू दे रखी है and the ratio value we know is 0.732, right? So which is nothing but you're gonna have simple answer. A कितना दे रखा है 200, RC is nothing but 0.732 into 200 and you're gonna have 146.4 picometers, which is your answer, that is A, right? So that's good. Let's move to the next one and give me some smileys, right? So न्यू सेशन स्टार्ट कब स्टार्ट हो गया? न्यू सेशन तो नहीं स्टार्ट हुआ है कुछ भी, राजेश। यस, ओके, ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गैसियस स्टेट्स। बहुत जरूरी है बिकॉज हाउ मेनी ऑफ यू देयर हु गेट कंफ्यूज्ड with what is Charles law, what is Gay-Lussac's law, what is Boyle's law. Do let me know. जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है इन तीनों में आप लोग क्या कंफ्यूज होते हो. यस, एंड दैट्स व्हाट इट इज. So over here I am actually gonna tell you how to get this one really correct. So over here whenever we're gonna talk about Boyle's law, you should remember your temperature is constant. Okay, temperature is constant over here, and your P by PV, product of PV, is also constant. That means pressure is inversely proportional to your volume. If your volume is increasing, your pressure is decreasing. So do remember that. Charles law के case में you should remember it's pressure which is constant and V by T is constant. Other words, V is directly proportional to T. If your T is increasing, your V also increases. ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं Gay-Lussac's law के बारे में, where your pressure is constant. No, Gay-Lussac's law के अंदर volume is constant. That means pressure is directly proportional to temperature. If your temperature increases, pressure increases. That means temperature increasing, pressure increasing. So that is how you should remember all of these laws in way. I mean, graphical representation बहुत important है in question, in laws के बारे में. So I am sure आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हो इन चीजों की, because ऐसे questions बहुत बारी आते हैं gaseous states में से. ठीक है? Okay. So over here, whenever we're gonna talk about ideal and real gas के बीच में differences, this is, I am not gonna go through. This is for you guys. You have to take a screenshot of this, and this is gonna be there in the PDF. But yes, if you want to know what is the difference between ideal gas and real gases, आपको दो बातें बहुत जरूरी पता होनी चाहिए, which is the volume occupied by the molecules of your ideal gas is negligible. ठीक है, यहाँ पे negligible volume नहीं होगी, यहाँ पे आपका ideal gas में negligible थी, यहाँ पे नहीं होगी. Ideal gas के अंदर your molecules and molecules जो होंगे gases के, उनके बीच attractive forces नहीं है. But you should remember in real gases attractive forces are actually present. So ये बात आपको ध्यान रखनी है. Force of attraction are not negligible, you should remember. ठीक है, so ये आपको बात ध्यान रखनी है. ये दो major important things है
इक्वेशन PV is equals to nRT, I'm sure everybody knows. वैन डर वाल इक्वेशन आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, where A and B are your वैन डर वाल coefficients for particular gases, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ओवर हियर वेयर आई कैन सी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, आई कैन सी इन माय वीडियो इट्स वर्किंग रियली फाइन। 2.8 grams of gas at 1 atm and 273 Kelvin occupies a volume of 2.24 liters. The gas cannot be. It is, we are talking about 2.8 grams of a gas at 1 atm and 273 Kelvin occupies a volume of 2.24 liters. The gas cannot be. So, जल्दी से बताना आप लोगों ने मुझे क्या आंसर होने वाला है इसके लिए। यस यस, जल्दी से बताओ। And what do you think is going to be the correct answer? I could see the chat over here. Plenty of you are giving me. Okay, so Dinkar ने D दिया है, and I could see plenty of you giving me C and D and A. Okay, the correct answer to this question is absolutely and absolutely. The gas cannot be. Yes, it's absolutely O2. And how are we going to do that? See guys, over here. We're talking about 2.8 grams of gas at 1 atm. ठीक है, occupies a volume 2.24 liters. That means आपकी यहाँ पे पहली बात तो देखो, गैस मोल्स दे रखे हैं which is 0.1 moles, है कि नहीं? बिकॉज वी नो 22.4 लीटर होता है हमारा 1 मोल। अच्छा, 2.8 ग्राम दे रखा है हमारे को, राइट। 2.8 ग्राम मतलब यहाँ पे आपको पहले मुझे बताना है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस वन इज एब्सोल्युटली 14। यहाँ पे N2 है विच इज ऑल्सो, नहीं, मॉलिक्यूलर मास 14 नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे 28 एंड यहाँ पे भी 28 एंड यहाँ पे भी 28 और O2 का हो जाता है 32। यू शुड रिमेंबर यहाँ पे 0.1 मोल्स है, 2.8 2.8 2.8 इनका सबका 0.1 मोल लोगे तो 2.8 इज गोना बी द मास, राइट। बट यहाँ पे O2 का है 32 which is gonna be 3.2 grams. अगर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है it would be 3.2 grams, but which is gonna be the wrong one. Cannot have that one, right? So do remember that. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर हम आ जाते हैं वेयर वी कैन टॉक अबाउट वेस्पर थ्योरी, ठीक है। सो आई एम श्योर यू गेटिंग इट गाइस। यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट द वेस्पर थ्योरी। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड by repulsion between all the electron pairs present in the valence shell. That means सबसे ज्यादा जो हमारा रिपल्शन होता है वो होता है लोन पेयर रिपल्शन इज द मैक्सिमम, then lone pair bond pair repulsion is a bit lesser than the lone pair, लास्ट में आता है हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दैट मींस सबसे गंदा बच्चा कौन है? सबसे गंदा बच्चा है लोन पेयर जो सबसे ज्यादा धक्का मुक्की करता है, फिर बॉन्ड पेयर कम धक्का मुक्की करता है, और जब दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो वो दोनों कम धक्का मुक्की करते हैं सबसे, ठीक है। सो ऐसे आप याद रख सकते हो। whenever we're going to talk about the determination of shape of molecule using Vesper theory, क्या यूज करना है आपने, ठीक है। ये देखो, कैलकुलेट x where x is the number of electron pair using the following method, ठीक है। x is nothing but the number of valence electrons of central atom, number of valence electrons। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वी नो 7, राइट। वी नो हेलोजेंस के 7 होते हैं, वी नो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर 6 होते हैं, वी नो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर 5 होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। कार्बन फैमिली के अंदर कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल, जल्दी से बताना आप लोगों ने मुझे चैट पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखना प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स, प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। ये बात आपको ध्यान रखिए। प्लस क्यों कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल? बिकॉज जब हम प्लस करते हैं ना तो हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। लेट्स से -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, हमारे को एक्चुअली में चेक करना है वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहली बात तो माइनस क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को? बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होने वाला है। एंड यस, फॉर दोस हु आर गिविंग मी 4 इज द राइट आंसर, दैट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पे वी आर गोना यूज अ चार्ट जहां पे हमारे पास x गिवन है और हमारे को यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। whenever we have x is equals to 2, linear, your beryllium chloride is one of the best examples. whenever we have 3, it is trigonal planar, BF3, है ना। whenever we have 3, angular, यहाँ पे है NO2 as well। 4 के लिए tetrahedral and trigonal pyramidal and angular, ये तीनों आएंगे। H2 देखा है ना हमने, एंगुलर होता है ना। NH3 देखा है हमने, ये यहाँ पे क्या होता है? यस, ट्राइगोनल पिरामिडल। जब भी हम शेप के बारे में बात करते हैं वी डू नॉट टेक लोन पेयर इनटू कंसिडरेशन,
राइट, लोन पेयर शेप में नहीं आता। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, राइट। एंड दिस इज द चार्ट that is going to be there for you. Do click a screenshot and write a thumbs ups on the chat ताकि ये मुझे पता चले कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एंड यस इट इज गोना बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं आगे डिफरेंस बिटवीन वीपीटी एंड एमओटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, यस, was first proposed by W. Hitler and F. London. Okay, and whenever we're going to talk about molecular orbital theory, it is by F. Hunt and R. S. Mulliken. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है explains the bonding of atomic orbitals. Bonding of atomic orbitals. यहाँ पे MOT में एक नया कॉन्सेप्ट आता था जो था molecular orbital theory, और वो हमारे को बताता था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, ज्यादा जिनकी होती है वो हो जाते हैं एंटी, और जो जिनकी कम होती है वो होते हैं बॉन्डिंग। सो ऊपर वालों की होती है एंटी बॉन्डिंग एंड नीचे वाले होते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। चलो यहाँ पे डिस्क्राइब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, described bonding molecular orbitals and anti-bonding, anti-bonding molecular orbitals, ये मैंने आपको बताया ना। So there is no place of resonance in this theory. Good explanation for paramagnetic character of oxygen, है ना। Calculations are very difficult. Calculations are simpler over here. Do remember that. यहाँ पे bond order of which of the following molecule is zero? F2, O2, B2, Li2. जल्दी से आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा आंसर ठीक होने वाला है, F2, O2, B2 और Li2। मैं आपको बाकियों के भी आंसर दूंगा, ठीक है। एंड आई कुड लुक इनटू प्लेंटी ऑफ यू आर गिविंग मी सी, कुछ बच्चे दे रहे हैं डी और बी भी। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन 5 seconds, 5 4 3 2 and 1, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली सी। यस, F2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 1, यस 1, O2 का होता है आपका 2, लिथियम का होता है 1 एंड बेरिलियम 2 का होता है आपका 0। कैसे करेंगे, वी आर गोना यूज MOT, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है बेरिलियम 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको बताना है आपने बेरिलियम 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके बेरिलियम में, एक मॉलिक्यूल एक एटम में। दो एटम्स में कितने होंगे टोटल 8, राइट। सो अब यहाँ पे देखते हैं, सो यू शुड रिमेंबर वी गोना टॉक अबाउट बेरिलियम। एक ही बेरिलियम बनाया, ये बेरिलियम है। These two that I've made right now is 1s and 1s atomic orbitals। यहाँ पे मैंने बनाया molecular orbital which is sigma 1s, यहाँ पे sigma star 1s, ठीक है। दो होते हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन, 1s2 कंप्लीट है दोनों का, यस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन्स नीचे, राइट। सो लेट मी जस्ट मेक इट, yes or no, on your y axis we have your energy, so do remember that, ठीक है। energy है on your y axis। now we're going to make it 2s and 2s, ठीक है। यहाँ पे we have similar energy, sigma star 2s and sigma 2s। again रफली बना रहा हूँ फटाफट, we know 2s भी दोनों का फील्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में। गाइज यू शुड रिमेंबर एंटी बॉन्डिंग वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट आर अगेंस्ट द बॉन्डिंग, सो दिस इज द रीजन दे आर नॉट एट ऑल गोना हेल्प द बॉन्डिंग टू हैपन। सो दिस इज द रीजन ओवर हियर यू आर एब्सोल्युटली गोना हैव द बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है which is nothing but number of electrons in bonding orbital minus the number of electrons in anti-bonding upon 2। so bonding में कितने हैं, दो, दो चार, which is 4 minus 4 because anti-bonding में भी है, we have 4 total upon 2 which is gonna be 0। so which is nothing but your bond order of your beryllium twice, right। so come on, give me a quick thumbs ups again and we are moving on to the next one, चलते हैं। so over here the correct order of decreasing HCH angle, correct order of decreasing, you have to look for the the maximum one and then decreasing in the following molecule, you have 3 molecules over here, one is over here, second and third, what do you think is going to be the correct answer? Here we see cyclopropane,
Yes, 1 2 3, this is C. Yeah, over here I see one C over here, double bond है. यहाँ पे I don't see any of such kind of thing. यहाँ पे I see methane, and the correct answer to this question is absolutely and absolutely which one? जल्दी से बताओ. I'm going to give you 5 more seconds. 5 4 3 2 and 1. Let's see. And yes, the correct answer to this question is B. I could see Pangolu Kezo is there giving me B. Pinky is giving me B. Anandita is giving me B. And yes, Samina is giving me B. That's good. So over here, how to do that, right? So you should remember the correct order of is first of all 2, then 1, and then 3. Yes, यही था आंसर. 2 and 1 and then 3. So यहाँ पे देखो कैसे. It is because the CHC bond has a bond angle of 120 degrees. When C bond is through a double bond, just we are talking about the second one. But in the case of CH4, the HCH bond has only 0.0109 degrees 28 minutes. Why? Because cycling compounds have a lesser one because of the hindrance. So you should remember that. Just because you have hindrance, a lot of hindrance is there, this is where it is gonna reduce. यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन था ना, यहाँ पे एक ही कार्बन था, तो ये जो हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना. यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हमारा बन रहा है ट्राइगोनल का प्लेनर कार्बन. यहाँ पे वी आर हैविंग अ टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन, इसीलिए टेट्राहेड्रल. यहाँ पे जैसे ही आपने दो कार्बन लगाए और यहाँ पे भी इनके हाइड्रोजन होने वाले हैं, यहाँ पे आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने वाली है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी, इसीलिए आपका यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा कम होने वाला है. सो डू रिमेंबर दैट. ठीक है, दैट्स ट्रू. चलिए, I am sure buffering is not exactly happening over here. That's good. चलिए, now let's move into thermodynamics. And yes, for those who have joined into the middle, we are covering up the physical chemistry for class 11th for your NEET. And सारे वो important topics कर रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए before moving on to the NEET examination. ठीक है? Calculation of work done in the various process. We're talking about isochoric. Iso means same. Choric means what? You have to tell me. Choric means same. I mean same. Iso means same. Choric means volume. So do remember that. ठीक है? यहाँ पे your delta V is gonna be 0. And you also know, according to your first law of thermodynamics, delta U is equals to Q plus W. है कि नहीं? And we all know W is nothing but minus P delta V. अब आपका डेल्टा V ही 0 है, आपका W भी 0 हो जाएगा. Yes, W is 0, your delta U is equals to Q. ये आपको बात ध्यान रखनी है ना in an isochoric process. Yes, और Q भी इसलिए लिख देते हैं because over here we get to know heat at constant volume. So आप हमेशा ये बात ध्यान रखना. Isothermal process के बारे में बात करते हैं, where iso means again same, thermal means temperature. This is temperature. Delta T is equals to 0. Whenever delta T is equals to 0, you should remember delta U भी हमारा 0 होने वाला है, because there is going to be no change in internal energy of the system. सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होने वाला. I'll give you an example. Let's say मेरे पास बॉटल नहीं है आज. Let's say I have an imaginary bottle in my hand. ठीक है, अब आप मेरे को बताओ बॉटल के अंदर पूरा 1 लीटर वाटर भी पड़ा हुआ है, बिकॉज पानी जो वाटर बॉटल की कैपेसिटी है वो है 1 लीटर. अगर मैं हीट दे ही नहीं रहा, अगर डेल्टा टी उसका टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा पानी का अंदर, तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही. सो यू शुड रिमेंबर दैट. यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस. ठीक है, आइडियल सिस्टम. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं. अगर आपका डेल्टा यू which is 0 है is equals to Q plus W, then you should remember minus Q is equals to W. Always remember that. अगर एक और चीज है, अगर आपका P external 0 है, इस केस में आपकी फ्री एक्सपेंशन होती है, आपका W 0 हो जाता है, आपका Q भी 0 हो जाता है. ठीक है, सब कुछ 0 हो जाता है. In an isothermal free expansion everything is 0. समझ में आ रहा है? Come on, give me some quick smileys on the chat and we are moving to the next one, which is adiabatic process, guys. In an adiabatic process, your Q is equals to 0. That means heat transfer through the walls, boundary के across आपका heat transfer between surrounding and your system नहीं हो सकता.
ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q plus W होता है, but Q तो जीरो है, so it is gonna be nothing but delta U is nothing but is equals to W. And adiabatic work को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, which is nothing but N CV delta T, तो आप लोगों ने ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। N CV delta T is nothing but your delta U. Whenever we gonna talk about your adiabatic process, cyclic process में work done area under the enclosed by PV diagram. Let's talk about it because question आते हैं इसके ऊपर. Let's say this is P by V diagram. यहाँ पे हमारा प्रेशर, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम. So let's say मैंने बनाया एक A स्टेज थी, से हम B स्टेज पे जा रहे हैं. यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, एंड आई कुड सी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है. एक्सपेंशन भी हो ही रहा होगा ए टू बी से, पर प्रेशर इज सेम. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वर्क डन, it is area under the curve, ठीक है. it is area under the curve which is your particularly known as work done. अब देखो, अगर क्लॉकवाइज है, जैसे कि हम A से B जा रहे हैं, क्या ये क्लॉकवाइज है, गोइंग टू माय राइट है ना, तो यहाँ पे होने वाला है नेगेटिव. यहाँ पे मतलब मैंने वर्क किया है, आई हैव गिवन वर्क टू द सिस्टम, एंड यस वॉल्यूम तभी बढ़ रही है यहाँ पे. एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. बिकॉज देयर आर गोना बी क्वेश्चंस व्हिच आर गोना आस्क यू कंप्लीट सर्कल दिखाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको वर्क. दिस इज वेयर यू शुड रिमेंबर दैट, राइट. सो अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ध्यान देना आपने, फॉर अ फीजिबल प्रोसेस योर डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव. इसका मतलब है डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव विच इज टोटल. For in the absence of non-PV work, you should remember your delta G should be zero. Delta G should be less than zero, which is negative. So आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है. Which things favor your spontaneous or a feasible process? Delta H should be negative. Delta S should be positive, which will give you delta H is equals to negative, because you have a formula which is delta G is equals to T delta H minus T delta S. अगर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, just because of this negative sign, the whole component is gonna become negative. Negative and negative is gonna give you a highly negative delta G. Negative delta G मतलब reaction is spontaneous. अच्छा, do let me know when do you have delta G is equals to zero. आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है when do you see delta H is equals delta G is equals to zero. Do let me know in the chat. क्या कंडीशन होती है वो. So over here, yes, whenever we're going to talk about reversible process at constant temperature and pressure, you should remember delta U plus P delta V, which is work, minus T delta S is nothing but your change in work, which is non-PV work. ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है. But yes, how many of you gonna tell me delta G is equals to zero कब होता है? Delta G is equals to zero कब होता है? At the case of yes equilibrium. At the case of equilibrium, your delta G is equals to zero. Forward reaction and backward reaction both are possible. ठीक है. So आप लोगों ने हमेशा बात ध्यान रखनी है. एंड अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डेल्टा जी जीरो का मतलब क्या हुआ? अगर गैल्वेनिक सेल के अंदर गैल्वेनिक सेल का डेल्टा जी जीरो आता है, व्हाट डज दैट मीन? Is cell charged, or cell is half charged, cell is 25% charged, or cell is zero charged? That means a dead cell. मुझे जानना है कि क्या बता सकते हो आप. Let's have very interesting question and a very easy peasy lemon squeezy question. If a door of a refrigerator is kept open, the room in the refrigerator which is kept, I mean refrigerator जिस room में रखा हुआ है, gets cooled, gets heated, neither gets cooled, neither gets heated, gets cooled on heating depending on the initial temperature of the room. जल्दी से बताना आप लोगों ने मुझे. And let's see मुझे आंसर के साथ लॉजिक कौन दे सकता है इस बात का. And the correct answer to this question is yes. I could see Revati is the first one giving me the answer, which is B. Isha ने भी दिया है, अनिल ने भी दिया है. Yes, it's an easy peasy lemon squeezy question, guys. The correct answer to this question is absolutely B. Yes, it gets heated. क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए. Let's say this is your refrigerator, ठीक है? ये आपका रेफ्रिजरेटर है and you have a room, ठीक है? ये रूम में रखा हुआ है.
अगर रेफ्रिजरेटर बंद था, गाइस यू शुड रिमेंबर, दिस बिकम्स योर सोर्स, अंदर वाला, अंदर द, यस, एंड जो सिंक होता है वो होता है ये रूम। बट एग्जैक्टली यू शुड रिमेंबर, जब आपका ये डोर आपने खोला हुआ है, ओपन रखा हुआ है, यू शुड रिमेंबर दैट आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो आपके रूम को ही ठंडा कर रहा है, और जो हीट है वो भी रूम पे ही भेज रहा है। फिर एक बात मुझे बताओ, फिर गर्मी क्यों हो जाती है रूम में? व्हाई डज इट गेट्स हीटेड? बिकॉज यू शुड रिमेंबर, जो हमारे रेफ्रिजरेटर की मशीनरी होती है, while it is working also generates heat. हीट एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर की 100% तो नहीं होती ना, सो आपकी जो मशीनरी है रेफ्रिजरेटर की, दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस और लिबरेट्स हीट while वर्किंग। इसीलिए वो एक्स्ट्रा हीट आपकी रूम को गर्म करती है। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। Yes, Pungolu Kezo is saying generate heats. Malathi is saying generate heats. Yes, that's true. That's good. So अब बढ़ रहे हैं आगे. If W1, W2, W3 and W4 are for an ideal gas are magnitude of work done in isothermal, adiabatic, isobaric and isochoric reversible expansion process, the correct order will be. What do you think is going to be the correct answer? Yes, A, B, C or D. Let's see how many of you are gonna tell me what do you think is gonna be the correct answer. जल्दी से बताओ. And the correct answer I could see, yes, Malati is saying C. And let's see how many of you are giving me the correct answers. Okay, and guys, you should remember the correct answer to this question is absolutely and absolutely D. So यहाँ पे W3 is gonna be, W3 कौन सा है? Which is your isobaric, same pressure. Then your W1, which is isothermal. Then it is W2, adiabatic, and then it is W4, which is isochoric. Let's see with the help of graph. So guys, सबसे पहले मैं isochoric बनाऊंगा. यहाँ पे from A, and we, let me just make it a straight line. Yes, I could make it. This is your W4. मैं बताता हूँ क्यों। गाइज अगर इस कर्व को देखेंगे, क्या इसके नीचे कुछ एरिया है? इसका एरिया है जीरो। W इज योर जीरो ओवर हियर, W4 जो है आपका जीरो है। अब देखो A से B जब हम जा रहे हैं, देखो कितना ज्यादा एरिया कवर हो सकता है ना? सो दैट इज वेयर योर आइसोबारिक केस में सबसे ज्यादा वर्क डन था। लेट मी जस्ट रब दिस वन। अगर हम बात करेंगे बाकियों के केस में, जैसे आइसोथर्मल के केस के अंदर बात करते हैं, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। एडियाबैटिक के बारे में बात कर लेते हैं पहले। दिस इज योर एडियाबैटिक, द डी कर्व, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ द कर्व है दैट इज दिस। बट अगर हम बात करें आइसोथर्मल के बारे में, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, राइट? सो वर्क जो होगा आपका आइसोथर्मल के केस में थोड़ा ज्यादा होगा। यस, आइसोबार के केस में सबसे मैक्सिमम होगा, एडियाबैटिक के केस में थर्ड नंबर, एंड आइसोकोरिक के केस में फोर्थ नंबर होने वाला है, राइट? सो हाउ वी गेट टू नो दिस? How do we get to know this? By knowing what is exactly happening. Guys, A से B में देखो क्या प्रेशर चेंज हो रहा है? नहीं, it is delta P which is equals to 0, which is nothing but your isobaric. Delta V के केस में देखो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम सेम है, but area under the curve is 0 over there. So do remember that. Hi Asmita saying welcome back to the class. Yes, we are meeting again soon. Over here, important points in equilibrium. Let's learn some important points in equilibrium over here. Equilibrium constant के अगर हम बारे में बात करते हैं, let's have a reaction first of all, क्योंकि यहाँ पे reaction नहीं लिखा हुआ है। A of A and B moles of B giving you C moles of, not D, let me just rub this, it's gonna be C, capital C. C and small d moles of D. So ये बात आपको ध्यान रखनी है। And guys, मुझे एक बात बताओ, A and B are reactants over here. Are C and D also reactants for backward reaction? If I say backward reaction के बारे में बात करें, do you think that C and D components are also can also act as reactants? जल्दी से बताना मुझे, ठीक है? Thank you so much, Swati. Over here, whenever we're going to talk about the equilibrium constant K, over here or Kc, you should remember your products come first. अगर हम forward direction के बारे में बात कर रहे हैं, your products are C and D.
which is C, product of C, concentration of C and D, but stoichiometric coefficients are going to be in the power C and D. एंड अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की, वो आएंगे हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे न्यूमरेटर में, एंड A raised power A dot B raised power B, which is nothing but your Kc. Guys, ये है in the case of forward direction. अगर हम backward direction के बारे में बात करेंगे, backward direction के बारे में, this is for forward. Okay, let me just write it for you. This is for forward. If you're going to talk about the backward direction, it is going to be Kc dash is going to be 1 by Kc. सॉल्व नहीं करना, सीधा 1 by सीधा रेसिप्रोकल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा. क्या करना है गाइस, डू लेट मी नो इन द चैट. सिर्फ रेसिप्रोकल करना है. Kc डैश मैंने लिखा है फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है. यू हैव टू रेसिप्रोकेट द फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, एंड यू विल बी गेटिंग योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर योर बैकवर्ड डायरेक्शन. जल्दी से लिखो चैट पे, यू हैव टू राइट रेसिप्रोकल, वी हैव टू डू रेसिप्रोकल. yes, then yes Aditi, that's your right. Over there, C plus D E F value will be, नहीं ये सब नहीं करना हमें वहाँ पे. who's this over there, we are talking, I'm talking to Sam Ravi, you don't worry about it. yes, that's true, we are gonna talk about reciprocal. यहाँ पे सबने लिखना शुरू कर दिया, that's true. यहाँ पे whenever we gonna talk about some of the things which is delta G और आपके यहाँ पे K के बीच जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बीच क्या रिलेशन है. so delta G naught is equals to minus 2.303 RT log K. या फिर आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K. Just because we are converting your natural log to your log base to power 10, we are using 2.303. बस that's it. So आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है. Where T is your absolute temperature, R is your universal gas constant, and delta G is nothing but your standard Gibbs free energy. ठीक है. Yes, that's true. Thank you so much, Aditi, and thank you everybody over here. Sonali, Samina, Anandita, Revati, Meenu, yes, Asmita, for writing and being active on the chat. Right? So यहाँ पे guys, we should remember whenever we're going to talk about degree of dissociation. Degree of dissociation के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, alpha is equals to number of moles dissociated upon initial moles of initial number of moles taken, which is not going to equal to fraction of moles dissociated out of 1 mole. So आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है. Whenever we're going to talk about dissociation, degree of dissociation, that is nothing but alpha, is also a very important thing that you should be learning for your NEET examination. ठीक है. Now we have a question. फटाफट क्वेश्चन करते हैं, because मैं आपको लोगों को बोर नहीं करना चाहता. आप लोग थ्योरी से बोर हो जाते हो ना, because I can see plenty of you are not giving me smileys on the chat. So how many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create a pH of 2? हम क्या करना चाहते हैं, हम आपको मैं एक बार बताता हूँ. The most easiest case is pH1 मतलब होता है आपका H plus ion concentration which is nothing but 10 raised power minus 1. अब pH2 का मतलब हुआ हमारा जो H plus ion concentration है that is 10 raised power minus 2. मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. अब मुझे बताओ, डोंट यू थिंक इधर से इधर जब हम जा रहे हैं वी आर डाइल्यूटिंग इट 10 टाइम्स, डाइल्यूटिंग, यस 10 टाइम्स. सो अगर हमारी पहली लीटर की कितने थे, पहले हमारे पास था 1 लीटर, अगर मुझे 10 टाइम डाइल्यूट करना है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना चाहिए होगा फाइनल, व्हिच इज गोना बी 10 लीटर्स, राइट. और एक्स्ट्रा 10 लीटर्स बनाने के लिए, टोटल 10 लीटर्स बनाने के लिए हमें 1 लीटर से सीधा 9 लीटर्स ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 10 लीटर्स. सो दिस इज हाउ इट इज गाइस. यस, डी इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज नथिंग बट, यस ओवर हियर व्हिच इज नथिंग बट 9. सो डू रिमेंबर दैट. That's good. So now, as we know, अगर mathematically देखना है, pH has a formula which is minus log 10 H plus, right? pH is equals to 1 is nothing but you're gonna have the value which is 0.1 molarity. pH 2 के लिए जो हमारा H plus ion concentration होगा वो होगा 0.01 molarity. बस इधर से इधर 10 times 10x dilution करनी है. And 1 लीटर से 10 लीटर्स बनाना है ना, तभी तो 10 times dilution होगी. टोटल ऐड कितना करना पड़ेगा इस पे इधर ले जाने के लिए, प्लस 9 लीटर्स. सो दैट इज हाउ इट इज. डू रिमेंबर दैट, ठीक है.
Now let's move to the next one. Oh wow, हमने सब कुछ खत्म कर लिया. So guys, over here I'm talking about NEET 12 NEET crash course over here, and yes, features are gonna be 4 live online interactive sessions per day, 2 of biology, 1 of physics and 1 of chemistry. All the classes are going to be for 1.5 hours ताकि आपका पूरा का पूरा कोर्स हम यूं खत्म कर पाए within few weeks. Okay, complete revision of important questions from NEET point of view are going to be there. Complete revision होने वाली है. 134 complete sessions होने वाले हैं आपके PCB के. 20 full टेस्ट होंगे आपके, ताकि आप सारे टेस्ट कर पाओ जो नीट के हम लोगों ने बनाए हैं, ताकि आपको नीट का एग्जामिनेशन ही बहुत इजी लगने लगे. 5 part टेस्ट होने वाले हैं curated by NEET experts who have produced top AIR rankings. And just like Vani ma'am, you all know Vani ma'am, right? So unlimited doubt solving throughout the course is gonna happen. Unlimited, right? Doubt solving. Access of recorded sessions and study material is going to be available 24/7. मतलब आपने अगर कोई क्लास मिस भी कर दी है वो भी आपको 24/7 अवेलेबल मिलेगी, और जो कंटेंट है वो भी मिलेगा. So do remember that. यहाँ पे if you have to go towards and enrolling, you only have to pay the price which is as minimum as 5,999 for all 3 subjects included, right? PCB की तीनों की तैयारी होने वाली है in just rupees 5,999 over here. You have to use the coupon code YT NEET double C over there, and you will be able to get this maximum discount. The actual price is 24,000. Yes, and आपको जो price देना है that is nothing but 6,000. 75% discount is there, guys. Go to the link vdnt.in/neet double C and use the coupon code YT double C over there, and you will be able to avail the maximum discount. And yes, how to avail it? Go to the link, click on enroll now. I have the coupon code, and just use the coupon code and enroll now. And yes, you would be there with amazing teachers who are actually gonna make you qualify NEET with great AIR rankings, right? So amazing, guys. Thank you so much for joining over here. I could see plenty of you are saying thank you so much. Guys, pleasure is all mine. And you know what, you guys are the real rock stars, because even I am sure today we had a lot of buffering in the class, but you guys have a lot of patience. Thank you so much for that. And yes, without any delay, without any due, do subscribe the channel, guys, which is Biotonic, because I am going to be there for your chemistry preparation, specifically for your NEET examination. Subscribe the channel, like the video if you have actually enjoyed, what we have learned today. And in the next week on Saturday same time, I am going to be there with inorganic of class 11, and all the important things that you should know for your NEET preparation. And we are going to meet again for plenty of times, right? So again, thank you so much, guys. See you soon. Good night, take care, tata, and bye bye. All the best, stay safe. Bye, guys.